back to Economic Decode. Today we are talking about the GATS. GATS is a kind of agreement that is a general agreement on trade services. Just last video we had seen the WTO, the principle, the aim of WTO, European Union we had seen. सिमिलरली गैट एक तरह का एग्रीमेंट है जो बनाया गया है फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ मल्टीलैटरल रूल्स गवर्निंग इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज, मतलब जितने सारे ट्रेडिंग होते हैं उनके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करने के लिए ये गैट जो है वो एग्रीमेंट का जो है बनाया गया है, विच इज़ ऑल्सो हियर द मेंशन द जनरल एग्रीमेंट ऑन द सर्विस हैज़ टू मेजर अक्रॉस द बॉर्डर रिक्वायरमेंट्स. जनरल एग्रीमेंट जो बनाया गया है उस पर टू मेजर है, दैट मीन्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन एंड सेकेंड दे आर गोइंग टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी, कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे. हम एग्रीमेंट अगर बना रहे हैं फॉर अ ट्रेडिंग, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट दैट. एंड ऑल्सो द सेकेंड मेजर aspect is like transparency. Whenever there is any trading between two countries, two nations or more than that, so they are going to maintain transparency. They have to maintain transparency while they are trading between two nations. So we will see three main objective of GATT, which is most commonly question asked in examination. So to create a multilateral framework for the principles which includes trade service, include elaboration of the principal possible discipline for the individual sector. So that means to create multilateral framework, that means to create multiple principles for the services, trading, businesses, elaboration of the discipline for the individual sector. कि गैट जो है ये एक ट्रेडिंग के लिए रूल नहीं बनाता है, बट विच ऑल्सो गिव्स रूल्स फॉर द इंडिविजुअल सेक्टर. अगर कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ इंडिविजुअली भी अगर ट्रेडिंग करती है, स्टिल दे आर गोइंग टू follow the same rules and regulation. Second principle say to expand the trade in service under condition of transparency and progressive liberalization. That means आपकी जो भी trading होती it has to be in transparency. You should be more transparent, more loyal when you are doing trading, when you are doing business with the other nation, and also it has to be progressive. मतलब आपका progress होना चाहिए, आपके nation का भी progress होना चाहिए if you are indulged into trading, and which also leads to the more liberalization. To promote economic growth, obviously, which is a main aspect, main backbone for the GATT, which is to promote economic growth of all the trading partners and developing for the developing countries. एक जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हर एक कंट्री को मिलना बहुत ज़रूरी होता है, वेदर इट इज़ इन ट्रेडिंग, वेदर इट इज़ इन बिजनेस, वेदर इट इज़ इन शेयरिंग टेक्नोलॉजी. ऑल्सो इकोनॉमिक development is very important, whether it is developed country, whether it is underdeveloped country. So these are all three principle. First, multilateral framework need to be created. Second, which is a condition of transparency which leads to the progressive liberalization. And the third one, which has to be help the nation for the growth of their economical development, whether it is a developing country or developed country. Now we will see the important feature of GATT. We had seen the three main objective कि GATT ये agreement setup करने के लिए तीन main objective ये थे, but उसके कुछ features भी थे. We are going to see we are going to check that one by one. Important feature of this agreement, which again the same one feature, which is again multilateral rules, to create multiple rules for the trading of the services, to maintain the transparency into the business for the progressive liberalization. जो same object था जो गैट के एग्रीमेंट में था, विच इज़ द सेम मेन ऑब्जेक्ट. द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विच इज़ एज इट इज़ यू कैन राइट इन फ्यूचर. द सेकेंड स्पिल आउट ऑफ द सर्टन जनरल ऑब्लिगेशन सच एज एक्सटेंशन ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन मेंटेनेंस ऑफ द ट्रांसपेरेंसी. जितने भी मोस्ट फेवर्ड नेशन, दैट मीन जिन कंट्रीज़ ने मिलकर यूनियन अगर सेटअप की है, फॉर एग्जाम्पल अगर EU है तो EU ने जो है 28 कंट्रीज़ है, तो उनकी 28 कंट्रीज़ के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है, आपके मोस्ट फेवर्ड नेशन उसमें अगर है, स्टिल यू हैव टू मेंटेन दैट ट्रांसपेरेंसी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड नेशनल ट्रीटमेंट. एक नेशनल ट्रीटमेंट जो है नेशन एक दूसरे को जो है वी हैज़ टू बी ट्रीटेड इक्वली. एंड
for the market access to the service supplier of the other members. मार्केट जो है वो हर एक ट्रेडर्स के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, उसमें फेवरिंग नहीं होना चाहिए कि अगर आप दो और दो से ज़्यादा नेशन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं देन XYZ और ABC ट्रेडर्स जो है वही फेवर्ड होते हैं. अगर कोई न्यू बिजनेस आता है, न्यू ट्रेडर आता है बिजनेस के लिए, सो मार्केट जो है वो नए ट्रेडर के लिए भी वेलकम, it has to be welcome and open market to the new trader also. Next it says, the fifth one, an obligation not to be discrimination between service supplier of the other members. Obligation not to be discriminate, एक ऑब्लिगेशन जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए कि ये हमारा फेवर्ड नेशन है एंड ये अनफेवर्ड नेशन है. इंक्रीज द पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड ट्रेड इन सर्विस एंड डेवलपिंग कंट्रीज. गैट की तरह से क्या होता है, नए नए जो बिजनेसेस आते हैं, नए नए ट्रेडर्स है, दे आर गेटिंग अ प्लेटफॉर्म टू चैनलाइज देयर प्रोडक्ट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल्सो गिव्स इकोनॉमिकल बूस्ट फॉर दैट नेशन. Again, the last says members are free to decide which service will be the subject to the market access. जितने भी members होते हैं, whether it is a member of a GATT, whether it is a member of any union, they are freely accessible for the market, and the nation treatment commitment in their national schedules. As per the nation treatment has to be given equally for the all the nation, and if you are a part of any union then has to be given. So all are the objectives and principles are set up for the agreement of GATT, which is very simple and very easy topic to remember, which is similarly like a WTO, but World Trade Organization is quite different from that. But some of the points, 50% points you can relate same, like giving favoring, not favoring to the nation, giving equal treatment to the nation, etc. So hope you guys understand. Thank you for watching Economic Decode.